Hello friends, in this video we will discuss about Bhudan movement in Odisha which is a very important question for OPSC prelims. जदि आपण OPSC prelims रा क्वेश्चन पेपर देखिथिबे ताले OPSC prelims रे भूदान मूवमेंट ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आसीछि. You can see here Bhudan movement in Odisha. This is a question of 2016 OPSC mains GS paper 1. तो से आम भूदान मूवमेंट को पूरा डिटेल रे डिस्कस करवा. इट इज ए 5 मार्कर क्वेश्चन बट आम पूरा डिटेल डिस्कस करवा. तापर मु समराइज्ड वीडियो मध्य आपको देदेवि जो खाली 5 मार्कर आपन कौन लिखिबे मु आपको बतेदेवि. बट दिस इज फॉर होल डिस्कशन बिकॉज यदि आपको इंटरव्यू रे क्वेश्चन पचारिबे ताले आपन पाखर नॉलेज थिबा कथा सफिशिएंट. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. बट बिफोर वी बिगिन लेट मी टेल यू जदि आपन चैनल टी को सब्सक्राइब करना ताले चैनल को सब्सक्राइब कर दंतु एवं डिस्क्रिप्शन रे थिबा लिंक टेलीग्राम चैनल वाला लिंक आपन सेठी जॉइन करंतु. सबु जगह वीडियो लिस्ट आपन सेठी पाई जिवे, सब जगह प्लेलिस्ट सब जिंस आपन सेठी पाई जिवे एवं बेल नोटिफिकेशन को दबाई दियो सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ईच सिंगल वीडियो वी अपलोड. नाउ लेट्स स्टार्ट. देखंतु भूदान मूवमेंट को स्टार्ट किए करथिले फर्स्ट. दैट इज ए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर OPSC, UPSC, different ASO, different examination prelims रे आसीबो. भूदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय आचार्य विनोबा भावे जे कि जने ट्रस्टेड फॉलोअर थिले महात्मा गांधी करो. And Vinobaji launched in the country in the early 50s of the last century. This Bhudan movement को से early 50s of last century रे start करथिले माने 1951 रे start करथिले स्वाधीनता पर. The movement was an attempt to land reform. Land reform पाई गोटे मूवमेंट थिला एवं जिते भी लैंड प्रोब्लेम अछि आम देश रे ताको सॉल्व करिवार प्रोब्लेम थिला. सॉल्व करिवा पाई गोटे मूवमेंट थिला. यू नो बहुत सारा लोकों को पाखर एक्स्ट्रा लैंड थिला, जमींदार थिले एवं बहुत सारा लोक एमिति थिले जो माने कि लैंड लेस थिले. तो जे माने लैंड सेल्फ सरप्लस थिले तांको लैंड लेस मन को किछि मात्रा रे लैंड ट्रांसफर करिवार मूवमेंट थिला. भूदान भू जमीदान माने भूमि दान करिवा. Okay, and that is a novel way by making land available to most submerged and disadvantaged class of Indian society, and the landless and the poor, land poor, and the equitable distribution of land by voluntary donation. इतरे voluntary donation करा जायला काटू forcefully the land को ताटू छड़े निया जाउ नथिला. that you have to remember. equitable distribution पई चेष्टा करा जाउथला. And the movement deriving its inspiration from Gandhian philosophy and technique created a sensation in Indian society for a few years by making mass appeal and giving rise to the hope of solving the age-old land problem by producing miraculous result in the initial of its launch. तो जेतले स्टार्ट इला 1951 रे से टाइम रे बहुत सारा माने मिराकुलस रिजल्ट देखिया को मिलला. मास अपील्स से माने कले एवं जहा तांकर होप थिला फॉर सॉल्विंग द एज ओल्ड लैंड प्रॉब्लम सेटा तांको ठीक हिसाब रे जाउथिबार तांको देखिया को मिलला. एंड इट वाज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट बेस्ड ऑन द थियोरी ऑफ ट्रस्टीशिप एंड इज एम्फासाइज्ड ऑन द नीड ऑफ क्लास कोऑपरेशन इन अग्रेरियन सोसाइटी. तो क्लास कोऑपरेशन करा अग्रेरियन सोसाइटी रे ता ऊपर एम्फासाइज करा जायतला. एंड हियर दिस वाज वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज वॉलंटरी डोनेशन करा जायतला लैंड रो. नाउ this is a very important movement and it is owed its origin during Vinoba's tour of a strife-torn region Telangana in Hyderabad in April 1951. तो जेतले से गोटे जगह को जाइतले तेलंगाना सेठी स्ट्राइप माने बहुत लोकों को बहुत खराब मिजरी कंडीशन से देखिया को पाइले. एंड ही अंडरटुक द टूर टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस इन द रीजन एज इट विटनेस वायलेंट क्लासेस बिटवीन द कम्युनिस्ट एंड द लैंडलॉर्ड्स इन द वेक ऑफ एन अग्रारियन मूवमेंट. से टाइम रे गोटे अग्रारियन मूवमेंट होतला जोटी कि कम्युनिस्ट एवं लैंडलॉर्ड्स भितर गोटे फाइट क्लासेस वायलेंट क्लासेस देखिया को मिलुतला. तो सेठी पीस करिया पई ओके पीस कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करिया पई से सेठी जाइदिले. Now, on April 18, 1951, a small but extraordinary incident देखिया को मिलला तांको कैंप रे जोटे कि पोचामपल्ली विलेज रे थिला. सही दिन माने 18 अप्रैल 1951 रे विनोबा को 100 एकड़ लैंड दिया गला बाय रामचंद्र रेड्डी. रामचंद्र रेड्डी तांको
land 100 acre land ଦେଇଥିଲେ after he appealed to assembled villagers in his prayer meeting ତ ପ୍ରେୟାର ମିଟିଂରେ ଆସେମ୍ବଲ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡି ମାନେ ବିନୋବା ଭାବେ କହିଥିଲେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡି ନିଜେ ତାଙ୍କୁ 100 acre ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ତ ବିନୋବା ଭାବେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କି ଭିଲେଜର ମାନଙ୍କୁ ଆସେମ୍ବଲ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ସେଇଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡି ତାଙ୍କୁ 100 acre ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ in his prayer meeting to do something for the horizon of the village ସେଇଠି ସେ assemble କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ and this incident came as a revelation to Vinova and he became convinced that if one man on listening to his appeal could offer gifts of land surely others could be induced in the same way से भाविले जमती रामचंद्र रेड्डी तांको खाली तांको कथा सुनिकी तांको डोनेट करि पारले लैंड गिफ्ट करि पारले तो अलगा माने भी तांको कथा सुनिकी से माने भी इंड्यूस्ड हे पारबे सेम वे रे बट इट वाज ओनली आफ्टर रिसीविंग द सेकंड गिफ्ट 19 अप्रैल 1952 रे इन द विलेज ऑफ Tanglapalli from Venkat Reddy he described previous gift as Bhudan and realized that Bhudan could provide a solution to the problem of extreme inequality in the country. जेतले तांको फर्स्ट लोक रामचंद्र रेड्डी तांको तेले डोनेट करथिले सेतेले से भूदाम टर्म कॉइन करनथिले या पर भूदाम को एते महत्व देइ नथिले से खोजुथिले तांकर जो प्रॉब्लम लोकंकर जो प्रॉब्लम अछि से प्रॉब्लम सॉल्यूशन से खोजुथिले किंतु वर्षे परे जाइकी से जेतेले सेकंड टाइम भूदान तांको करागला लैंड तांको गिफ्ट दियागला तंगलपल्ली विलेज रे वेंकट रेड्डी से टाइम रे से भाबिले जे दिस कुड बी द एक्सट्रीम सॉल्यूशन फॉर द एक्सट्रीम पॉवर्टी और एक्सट्रीम इनइक्वालिटी इन द कंट्री एंड दस विनोबा एवं तांको फॉलोअर पदयात्रा स्टार्ट कले फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड परस्यूड एट द लैंड ओनर to donate at least 1/6 of their land as Bhudan. आपणकर 1/6 एटलिस्ट दियंतु जदि आपणक पाखरे 60 एकड़ अछि त एटलिस्ट आपण 10 एकड़ लैंड डोनेट करंतु जदि आपणक पाखरे 6 एकड़ लैंड अछि ताले ओनली 1 एकड़ यू कैन डोनेट तो से ही इवेंट चलला दिस भूदान मूवमेंट जो थे कि लैंडलेस या फिर लैंड पुअर लोगों को भूदान करागला एंड द एनकरेजिंग रेस्पॉन्सेस to Vinoba's land gift mission in Telangana in which he secured 12,000 acre land in Bhutan. In 51 days, this emboldened Vinoba to continue the mission and finally prompted him to resolve on Gandhi's birthday 1951 to collect 50 million acres of land for landless from the whole country by 1957. This is 1952 actually. Now the induced the Sarvodaya worker in various states to devote their energy on acquiring the target 50 million टार्गेट तांकर थिला तो समस्त जाई कि लैंड माने डोनेशन पे कहउतले वॉलंटरी डोनेशन पे कहउतले एंड दस एन इंडिविजुअल एफर्ट एज्यूम द कैरेक्टर ऑफ ए मूवमेंट इंडिविजुअल एफर्ट बिनोबा स्टार्ट करथिले एवं तापर गोटे मूवमेंट स्टार्ट हेगला भूदान वर्क स्टार्ट हेगला जोथि कि इनिशियली व्यूड बाय सम एज ए मियर चैरिटी वर्क फर्स्ट किछि लोक तक गोटे चैरिटी वर्क भाबुतले किंतु गोटे नेशनल रिकंस्ट्रक्शन मूवमेंट रूप नेला भूदान मूवमेंट भूदान प्रोग्राम स्टार्ट हेतला ओडिशा रे 7 जनवरी 1952 रे and on that day Gopabandhu Chaudhary and his wife Rama Devi along with several others started their historic padayatra from Bori Ramachandrapur. Okay, sorry this is actually this 51 this is 51 ठीक अछि एडी माने सही वर्ष ही तांको सेकंड जगह रे तांको मिली जायतिला माने गोटे 1951 रे अप्रैल 11 रे मिलतिला गोटे किछि दिन परे तांको मिली जायतिला सो दैट यू हैव टू रिमेंबर ना सेम ईयर रे दीटा जगह तांको मिलतिला एवं सेम ईयर रे स्टार्ट ही जायतिला तो ओडिसा रे भी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हला ओके एंड सही दिन जो दिन स्टार्ट ला ओडिसा रे 7 जनवरी 1952 रे गोपबंधु चौधरी एवं तांको वाइफ रमा देवी से माने बहुत सारे जगह गले हिस्ट्रिक पदयात्रा कले बरी रामचंद्रपुर डिफरेंट जगह गले बरी रामचंद्रपुर को गले तापर सेठी कलेक्ट कले दिस लैंड फ्रॉम लैंडलेस एंड डिफरेंट जगह रे से माने Padayatra through initiated not intended for the purpose of Bhudan in the course it progress collect land gifts तो Bhudan land gifts से collect कले in the first meeting जोटा कि बरी रामचंद्रपुर रे हेतला first land gift was made by Harapriya Devi that's why it is very important गोटे women de land donate करथिले and Padayatra continued for 4 months and 22 days
and passed through 8 districts जोटी की total 1100 miles से माने cover कले एवं 1626 hectare of land से माने collect कले 233 donor माननको पाखरु second round पुणी से माने start कले तांको सहित माने सॉरी स्टार्ट कले और ताको गांधी जयंती डे कहगला माने गांधी जयंती डे रे स्टार्ट कले 1952 एवं सेटा 10 डिसेंबर 1952 एंड हला एतरे से माने 427 माइल यील्ड करथिले इन द कलेक्शन माने फोर्थ गले माने 427 माइल से माने पदयात्रा कले जोथरे कि से माने 463 एकड़ ऑफ लैंड कलेक्ट करि पाले 7 पेयर ऑफ बुलक्स कलेक्ट करि पाले एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स वर्थ 816 रुपीस रो कलेक्ट करि पाले सेते 816 रुपी बहुत थिला 816 टंका भी बहुत बेसी थिला से टाइम रे now though the movement started as a private movement it received the support from state government also and to facilitate the donation of the land to the movement and to provide for the distribution of such land Odisha legislative assembly Odisha bhudan yagna bill pass करथिला 1953 रे 9th April रे and it received the assent from the president of India on 26 July 1953 and became Odisha Act 16 of 1953 and the act provided the establishment of Bhudan Yagya Samiti in the state of Odisha and the Samiti was authorized to act to receive the donation or grant of land to distribute the land vested in it to landless person and to give a fillip to the movement in Odisha Vinova campaign gole Odisha state le actually Vinova अंकर जो भूदान कैंपेन थिला सेरा कोडी स्टार्ट हितिला सेरा ओडिशा रे ही स्टार्ट हेतला भूदान कैंपेन टा ओडिशा रे 26 जनवरी 1955 रे व्हेन ही सेट फुट एट देवला देवला जोटे फ्रंटियर विलेज अछि बालासोर डिस्ट्रिक्ट सेठी पदयात्रा करथिले एंड द फर्स्ट मीटिंग लक्ष्मण नाथ को सहित तांगर मीटिंग हेतला बालासोर डिस्ट्रिक्ट रे एंड सी अप्राइज्ड हेतले फॉर द प्रोग्रेस ऑफ दिस मूवमेंट इन ओडिशा एंड इट वाज रिपोर्टेड दैट इन द मीटिंग द टोटल भूदान कलेक्शन इन ओडिशा वाज 1,22,000 1,22,000 एकड़ लैंड से माने कलेक्ट करथिले but that was much less targeted from 5 lakh acre of land set for Bhudan collection in Odisha by Vinova by the end of 1957. However, एतिकी तो करी पालेनी but by the time he started the पदयात्रा in Odisha definite shift देखिया को मिलला in the movement as it took new form से आसला पर new form start ला a new form that called Gramdan also जोतिर के village मध्य दान करा गला which soon overshadowed the Bhudan program खाली पूरा गोटे गाँ donate कर दोतिले though the program of land giving was still there it became almost neglected activity in the subsequent year and little land was received after Gramdan as donation Gramdan an offshoot of Bhudan program was actually started in 1952 itself 51 re Bhudan 52 re Gramdan मन रखंतु and on 24 May start हेतला entire population of a village and mangrove in Uttar Pradesh donated their land in Bhudan ने समन तांकर पूरा village को ही donate कर दिले but it was not it was only during and after Vinova's foot march through Odisha that the movement assumed mass proportion जतले ओडिसा रे से आस्ते तापर ही mass proportion ला नले एमती छोटो मोटो चलथिला and this became a forceful campaign after Odisha तांकर visit and though the first Gramdan in Odisha was obtained in Manapur in Cuttack district 30 January 1953 the district of Koraput the movement received grand stimulus and by the time Vinova left Odisha on 1st October 1955 Koraput 606 Gramdan village already he jaytila out of 812 made their entire province okay 812 ରୁ 606 ଟା ପୁରା village ସେମାନେ contribute कर देथिले and the movement got impetus in 1956 जेतले नवकृष्ण चौधरी resign कर देले चीफ मिनिस्टर पदरु and join करतले मूवमेंट को as a result by the end of 1960 1946 villages माने 1946 टा विलेज गिफ्ट कर दिया गला ग्रामदान हिसाब रे in the state out of total 4500 ru it was a great success and the movement received fresh lease of life during Vinova's second padayatra in state तो second padayatra करथिले जोटा कि तांकर हितला 13 August 1963 रे and 12 December पर चलला ओडिसा रे and this padayatra which passed through 8 districts of western Odisha gave popularity of the movement in this region and this was very popular western Odisha बहुत popular हे बल्ला जोटी कि आगुरु किछि स्पेक्टाकुलर रिजल्ट देखा जाय नथिला सेठी हैला
Now out of 11,065 Gramdan ru खाली ओडिशा रे 2,807 Gramdan हेतिला माने मेजर portion खाली ओडिशा रे हेतिला 1965 पर्यंत and thus occupied second place in the country in this respect. And this to facilitate the donation of land to Bhudan and Gramdan movement in the state and to provide distribution of such land, government of Odisha passed kale Bhudan Gramdan Act in 1970. But despite legislative measure, the movement lost its momentum in the fourth five-year plan, that is 1916 to 74 bhitere, when the ceiling surplus provision came into force. Ceiling surplus provision asiwala. So 18 April 1976 रे Bhudan movement complete 25 year for its launch in the country, and through the March by 1976 silver jubilee year पालन करागला जोथरे कि 10,611 villages were gifted in Gramdan in Odisha, and yet the movement had failed to actualize the dream of Babe जोथरे से 50 million या फिर 5 lakh रो टारगेट रखी थिले. But it's okay, बहुत सक्सेस तथा देखा को मिलला. Thus the Bhudan Gramdan movement as a whole had failed to garner enough land for the landless in the state by silver jubilee year of the movement. All it could obtain in Odisha by the end of December 1975 was 12 lakhs acres, out of which 6 lakhs 79 665 acres of land were distributed among 74,687 family. That's a very good amount. Nevertheless, Odisha occupied the fourth place in the country so far in the progress of Gramdan Bhudan movement. Fourth place हासिल कला Gramdan movement रे. This is very important. So tribal area of the state donate कराला mainly. That is very important. माने sorry, tribal areas रे mainly बेसी donate करागला, and that is ironical. माने जोटी की माने आमे भाबुची जोटी बेसी लोक पुअर थांती सेठी बेसी लोक डोनेट करथिले, and that's a very good thing. You can see very ironical thing देखिया को मिलला. Substantial part of land donated in the movement was found either unsuitable for cultivation or या फिर under dispute position में थिला. So it was not means good, माने you can say, but फिर भी जहाँ ला that is great achievement, you can say. लोगों के भीतर unity देखिया को मिला से. Now however the movement should not be judged in terms of this material achievement, but from the fact of represented one of the major attempt after the independence to provide peaceful solution to the basic problem of Indian society, the land problem जोड़ा थिला. लोग voluntarily donate करथिले, and that's a very important thing. तो बस हमको एतकी जानिबार थिला, हम पूरा डिटेल डिस्कस करले भूदान मूवमेंट ग्रामदान मूवमेंट कोन. मो पाखरे आउट नोट अछि, मु प्रिपेयर करछि फॉर भूदान ग्रामदान मूवमेंट इन स्पेशल रेफरेंस टू कोरापुट, बिकॉज कोरापुट बहुत डोनेशन हेतला. तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कांसेप्ट और कोरापुट भूदान ग्रामदान मूवमेंट इन कोरापुट, then you can comment below and tell sir we want for the Koraput, then I will make a video on that. So this is for this video. Stay tuned for the next part. Thank you.